Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well student. So today my video is related to the inheritance of the one gene, and the experiment was done by the Gregor John Mendel, so which we will study in today's video. Principle of inheritance and variation जो chapter है उससे आपका ये टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले दो वर्ड यहाँ पे यूज़ हैं, इनहेरिटेंस एंड जीन। तो इन दोनों का हम लोग मतलब समझ लेते हैं। व्हाट डज इट मीन? इनहेरिटेंस इज व्हाट? इनहेरिटेंस इट इज अ प्रोसेस by which characters are passed on from one generation to next. It means from parents to their offspring. That's the definition of the inheritance. Now the next word in this topic is gene. So we will understand what is gene. ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले एक सेल स्ट्रक्चर बना रही हूँ। As you all know that the cell is covered by a cell membrane. तो चारों तरफ ये जो कवरिंग है that is a cell membrane. Inside of this, in animal cell, at the center, nucleus is present. They both are double layered structure, but I am just trying to explain gene, only gene. So what is inside of this nucleus? There are the thread-like structure present. These thread-like structure are known as chromatin fibers. Okay, these chromatin fibers will get condensed during the cell division, and they are known as chromosome. They will become short and thick, and they are visible, and they are known as chromosome. In human body, there are 46 chromosomes, or we can say 23 pairs of chromosome. In 23 pairs, there are 22 pairs are autosomes, whereas only one pair is sex chromosome. These are autosomes. These are not playing any important role in determination of sex, but that one pair is playing a very important role in sex determination. If it is XY, then it would be male, and if it is XX, then it would be female. So that's about the chromosome. Now the chromosomes are made up of spatial structure, DNA, and also some specific protein. DNA is what? DNA, if we talk about the full form of the DNA is deoxyribonucleic acid. Okay, this is deoxyribonucleic acid, and this DNA is a polymer of nucleotide. ठीक है, दिस अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो स्टूडेंट बना होता है वो बेसिकली 3 कंपाउंड से मिलके बना होता है। 3 कंपाउंड में आपका फर्स्ट आता है नाइट्रोजनस बेस, सेकंड है फॉस्फेट, और थर्ड है आपके पास में शुगर। ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके एक डीएनए बनाते हैं। ठीक है, so we are understanding what? We are understanding the gene. So gene is what? The DNA is a double helix structure like this, and this complete structure is made up of the nucleotide. So gene is basically the specific sequence of the nucleotide present on the DNA, and that will encode a particular protein which will express in a particular form of the character. That is known as gene, or we can say that's a unit of inheritance. So gene is unit of inheritance which is present on the DNA, and DNA is a part of the chromosome. If I want to define it, then I would like to define it in this way. Gene it is a
specific sequence of nucleotides present on DNA and code for a particular protein and which will express in form of particular feature of the body. That's a complete definition of the gene. So I think you got these two words. What do you understand by the inheritance? And the second word is a gene. Okay, so now we are going to study about the inheritance of the gene. In that we will study the experiment that was done by the Gregor John Mendel. Gregor John Mendel considered as the father of genetics. He is considered as the father of genetics. He had done the number of experiment on a garden pea. Okay, garden pea में इसने basically 7 characteristics का स्टडी की थी, 7 characteristics को लेके एक्सपेरिमेंट किए थे. गार्डन पी, द बॉटनिकल नेम ऑफ द गार्डन पी इज पाइसम sativum. To study the inheritance of one gene, he used only the one character, the length of plant, on which he had done the experiment. Okay, so what he had done in that experiment, he used one tall plant and another is a dwarf plant. Okay, the tall plant has capital T genotype, and the small plant or the dwarf plant has small t type of genotype. First, there will be segregation of the allele. Each parent has 2 allele. This is one parent, suppose this is A and this is B. These are 2 parent. They both have same allele. They both have, like, this is capital T and B also small t and small t. ठीक है, जब सेम टाइप के एलिल प्रेजेंट होते हैं तब हम लोग उसको कहते हैं होमोजाइगस. दैट्स नोन एज व्हाट? दैट्स नोन एज अ होमोजाइगस. और जब डिफरेंट टाइप के एलिल प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजाइगस. तो यहाँ पे होमोजाइगस टॉल पेरेंट है और ये हो गया आपका होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट. इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं. क्रॉस करवाने से पहले क्या होगा? देयर विल बी सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन ऑफ व्हाट? देयर विल बी सेग्रीगेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज एलिल. गैमेट जो होता है वो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है और मियोसिस प्रोसेस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे हो जाते हैं. इसलिए एक गैमेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिल जाएगा. इस तरह से यहाँ पे 2 गैमेट्स बन गए और दोनों गैमेट्स में एक एक एलिल चला गया. इसी तरह से यहाँ पे भी बनाएंगे स्मॉल t एंड देन फर्दर स्मॉल t. ओके, नाउ द क्रॉसिंग किस तरह से? व्हेन दिस कैपिटल T विल गेट फ्यूज्ड विद दिस स्मॉल t, इट विल फॉर्म लाइक दिस. अगेन दिस कैपिटल T will get fused with this small t, it will form like this. This capital T and again small t. This capital T will get fused with this small t, it will form small t. This generation is known as F1 generation, and what he observed in that F1 generation, that all plants were tall. All plants were tall. तो सिर्फ और सिर्फ एक ही
ट्रेट जो था वो F1 जनरेशन में ऑब्जर्व हुआ। दूसरा जो ट्रेट था हमारे पास में, जो ड्वार्फनेस वाला ट्रेट था, वो ऑब्जर्व नहीं हुआ। ये टॉलनेस वाला ट्रेट है, ये ड्वार्फनेस वाला ट्रेट है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एक ही ट्रेट ऑब्जर्व हुआ। रिसेसिव जो अदर ट्रेट था वो ऑब्जर्व नहीं हुआ। So that was all about the F1 generation. Next we will talk about the F2 generation. तो F2 जनरेशन में क्या किया, F2 जनरेशन में बेसिकली क्रॉस ही करवाया। ये जो F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी थी, जो ऑफस्प्रिंग थे, उन्हीं को ही आपस में क्रॉस करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ वहाँ पे। तो हम लोग ये ले लेते हैं कैपिटल T स्मॉल t और अगेन कैपिटल T स्मॉल t। अगेन देयर विल बी अ segregation of the allele. Only one allele will go into the one gamete like this. Now the crossing, if we will cross it, then what we will observe, like this capital T will get fused with this capital T and will form capital T. This capital T will get fused with this small t and will form capital T small t. This small t will get with capital T and it will form capital T small t. I am writing capital T first because capital letters are written first, or the dominant traits are written first. Now this will get fused with this and this will form small t small t. ठीक, तो स्मॉल टी जब हम लोगों को मिला तो कहीं ना कहीं जो ड्वार्फनेस ट्रेट था वो शो हुआ। एंड नाउ दिस जनरेशन इज़ द F2 जनरेशन। तो दिस जनरेशन इज़ F2 जनरेशन, फीलियल टू जनरेशन। तो फीलियल टू जनरेशन की जो ऑफस्प्रिंग थी वो कुछ इस तरह से थी, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t and small t. This capital T, which is a dominant trait, why it is known as a dominant trait? Because it will suppress the characteristic of the other trait or the other factor. Fine. So the recessive trait will not be shown in presence of the dominant trait. Or I can say that capital T is representing the dominant factor. That's why the dominant factor will express its character even in the presence of the recessive factor. Okay, so these three all are tall and the one is dwarf. So this is dwarf. तो डोमिनेंट फैक्टर बच्चों वो फैक्टर है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द रिसेसिव फैक्टर। और रिसेसिव फैक्टर वो फैक्टर होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ओनली इन प्रेजेंस ऑफ द रिसेसिव फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि फैक्टर टर्म वाज यूज्ड बाय द मेंडल और बाद में इन्हीं फैक्टर्स को जीन वर्ड दिया गया। ठीक है, तो जीन हम लोग इसको जीन भी कह सकते हैं, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, बट बिकॉज वी आर जस्ट स्टडिंग अबाउट द मेंडल एक्सपेरिमेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द नेम इज फैक्टर। ओके, सो 3 टॉल हो गए, 1 ड्वार्फ हो गए। ये जो रेशो था स्टूडेंट्स, इस रेशो को हम लोग कहते हैं phenotypic ratio. The phenotypic ratio which is given on the based of the expressed characteristics, जो कि expressed characteristics जो हम लोगों को दिख रही है characteristics, उसके बेस पे जो दिया जाता है उसको हम लोग phenotypic ratio कहते हैं, and that is what, that is 3:1. And if we will talk about the genotypic ratio, so you can see here the genetic constitution of this is capital T, this is capital T small t, this is again capital T small t, and this is small t. So 1 is there capital T, 2 is there capital T and small t, so that is 2, and the 1 is small t. So this ratio is known as genotypic ratio, and that ratio has been given on the basis of genetic constitution. So that's a 1:2:1. Okay, this is all about the inheritance of one gene. This type of cross, because we are studying only the one characteristic, and that is what, that is a length of the plant. So that is what, that is a
length of the plant. So this type of cross is known as monohybrid cross. Monohybrid cross. This is all about the inheritance of the one gene. Next we will study about the inheritance of the two gene in my next video.